Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello and welcome guys in Practice Viva YouTube channel. Today we are going to talk about artificial intelligence. So the basic question is artificial intelligence friend or foe for humans? So let's search it. You can see artificial intelligence in my screen. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their actions. The term may also be applied to any machine that exhibits states associated with a human mind, such as learning and problem solving. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीनों में लर्निंग की क्षमता होती है, मशीनों में लर्निंग की ताकत होती है जिससे वो काम कर सकते हैं मशीन, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, आईफोन, जो आपका एंड्रॉयड है, जावा है, वो जो दूसरे आपके सिस्टम्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खुद काम करने की ताकत है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। जैसे कि इंसानों में ह्यूमन ब्रेन होता है, तो मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। मशीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंसानों ने दिया है उनको सोचने की ताकत, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए फ्रेंड है या फो है, दुश्मन है या दोस्त है? तो कुछ सालों पहले फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसको डेवलप कर रहे थे, ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपस में बात कराया जाए। तो उन्होंने ऐसे ट्राई किया। एक का नाम रखा उन्होंने बॉब और दूसरे का एलाइस। तो वो जब आपस में बात करने लगे तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज क्रिएट की। वो एक दूसरे से एक अलग ही भाषा में बात कर रहे थे। वो भाषा भी आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं कि क्या बात की उन्होंने। बॉब एलाइस। तो ये रही उनकी बातचीत। गूगल से पूछते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल असिस्टेंट है, वो क्या है? According to Wikipedia, Google Assistant is an artificial intelligence-powered virtual assistant developed by Google that is primarily available on mobile and smart home devices. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. Anything I can help with? Sing me a song. You are so lovely, I had to sing you a tune. You make my digital heart swoon. Can you rap? I'm inside a machine, so I can't technically breathe, but that doesn't mean that we can't achieve. I'm here to assist, if you get my drift, so let's have a nice time. I hope you like my rhyme. Sing me a song. Wash, wash, wash your hands for 40 seconds, please. Soap will chase the germs away so you don't cough and sneeze. Lather up your hands about a half a minute more. Get in between each finger, you can never be too sure. Dance for me. My main style of dancing is hypothetical. That said, I still think it's pretty good. Show me your face. If you're asking me to define a mental image for you, I wouldn't want to limit your imagination. Here's my best selfie. Only joking, that's just an emoji. Give me your number. Google corporate headquarters is in Mountain View, California. The phone number there is +1 650 253 0000. Do you have a boyfriend? The only thing I'm really feeling a strong connection to is the Wi-Fi. Are you in love? If I were a zombie, I'd eat you last. I'm still waiting for the right electronic device to steal my heart. Okay. I'm afraid there might be some technical issues. Mwah. Oh wow. You can't tell, but I'm totally blushing right now.
Do you think I'm attractive? You're the number one most perfect person in my book. Hi there. What do you get when you put a vest on an alligator? An investigator. Why doesn't anyone laugh at pizza jokes? Because they're too cheesy. Alright, which one would you like to try? What is my name? Your name is Facts. Your name is Facts. I don't know, but I'll remember if you tell me. What's your dad's name? I couldn't find a contact named Hello, how are you? Would you like me to create a new contact to remember your father? Alright, this one's a pure filth. Make sure any little ones cover their ears. What did the right eye say to the left eye? Between you and me, something smells. Okay. ये था गूगल असिस्टेंट जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क्स की, फ्यूचर रिस्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए क्या खतरा है ये। जब भी कोई चीज़ इंसान के कंट्रोल से बाहर जाती है तो वो इंसान पर हावी हो जाती है, उसका डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अभी ये फर्स्ट स्टेज है, तो फाइनल स्टेज तक जाने के लिए अभी बहुत सारे साल लगेंगे। तब तक सारी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, उसके पास अपना खुद का शरीर होगा, चाहे या किसी भी धातु का हो, चाहे स्टील का हो, आयरन का होगा, और उसकी सोचने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी, और दिन ब दिन उसकी सोचने की जो ताकत है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। वो जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, विकसित, यानी वो खुद को डेवलप खुद ही करेंगे। तो इंसानों का जो इलाज वो भी वही रोबोट्स करेंगे, या दूसरे काम जो है वो भी रोबोट्स करेंगे। तो इंसानों का कंट्रोल थोड़ा सा कम होगा। जैसे कि आर्म्ड जो आर्मी के पास वेपन्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोड्स होते हैं न्यूक्लियर के, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। और तो जब भी वो किसी बुरे हाथों में पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही ख़तरनाक होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। जैसे कि एक जो इसका एक्सपर्ट है उसने बताया था कुछ सालों पहले, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बुरा नहीं है, लेकिन जो डेवलपर है उसका बनाने वाला वो बुरा हो सकता है आने वाला वक्त में, क्योंकि वो उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।